Hello bachcho, let us read the question. Statement 1. Torque acting on a body is the product of force on the body and the perpendicular distance of the force from the axis of rotation. Statement 2. In the absence of any external torque, the total angular momentum of the system remains conserved. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट्स है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. तो पहले हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे कि क्या है टॉर्क. टॉर्क इज द measure of rotational force which causes an object to rotate about an axis. Object to rotate about some axis. तो ये जो लीनियर मोशन में फोर्स होता है उसका एनालॉगस माना जा सकता है, पर इट इज़ कॉल्ड एज द रोटेशनल फोर्स. और एंगुलर मोमेंटम को भी हम डिफाइन करेंगे. सो measure of rotational momentum of an object. When an object is undergoing rotation. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हम एंगुलर मोमेंटम को इक्वेशन के दौरान लिखेंगे. एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड as the cross product of the position vector and the linear momentum. सो एंगुलर मोमेंटम को जनरली एल के नोटेशन देते हैं. एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और एल इज ऑल्सो रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ आर मॉड्यूलस ऑफ पी इंटू साइन थीटा, वेर थीटा इज द angle between R and P. The torque acting on a system is defined as the cross product of the
perpendicular distance from the axis of rotation and the force acting on the system. तो टॉर्क को ग्रीक लेटर टाउ से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. So F is the force and R is the perpendicular distance of the axis from perpendicular distance from the axis of rotation. Tau ko we can also write it as RF sin theta, where theta is the angle between R and F. So let us see what is the relation between torque and angular momentum. Differentiating angular momentum with time, तो हम लिखेंगे dl by dt is equal to d by dt of r cross p. अभी बिना किसी टर्म्स का इंटरचेंज किए हुए हम यहाँ का चेन रूल लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू dr by dt cross p plus r cross dp by dt. So dl by dt is equal to dr by dt is nothing but velocity है और हम लीनियर मोमेंटम को एम वी से लिखेंगे प्लस आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी. बिकॉज पी इज़ एम इंटू वी, मास कॉन्स्टेंट है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, सो वी कैन राइट दिस एज डी वी बाई डी टी. यहाँ पे वी हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर द सेम वेक्टर, तो ये ज़ीरो. देयरफॉर डी एल बाई डी टी is equal to r cross m into a, and we know that from Newton's second law mass into acceleration is force, so that is equal to r cross f. But हम जानते हैं कि r cross f is nothing but the torque. Therefore the torque is the rate of change of angular momentum. When external torque tau is 0, हम ये conclude कर सकते हैं कि the angular momentum is a constant. अभी हम question पे वापस जाके दोनों statements को फिर से देखेंगे और correct option mark करेंगे. So statement 1 is torque acting on a body is the product of force on the body and the perpendicular distance of the force from the axis of rotation, जो कि सही है. Statement 2, in the absence of any external torque, the total angular momentum of the system remains conserved, और ये भी सही है. So the correct option to this question is both statement 1 and statement 2 are correct.
The correct option is option A. Hope you have understood it well. Best of luck.